educational video. My name is Ankit Patel and today we are going to study about glycolysis. As I have already announced that we are going to have live video, but because of certain issues we cannot make it live. But yes, as I promised, I will provide you this video where I will be teaching you glycolysis. So let's study about the process glycolysis, right? What we know about glycolysis process is, in 10th standard we have studied a very small kind of reaction which just we have written a process called glycolysis, right? Where glucose get converted into pyruvic acid. One glucose molecule get converted into 2 pyruvic acid in all kind of respiration, whether it is aerobic respiration or it is anaerobic respiration. And even if it is anaerobic respiration, in yeast cells and in muscle cells, both of this kind of in all this kind of respiration, one thing is common, that is glycolysis, right? This glycolysis have fully studied by the 3 scientists, that is Emden, Meyerhof and Parnas, and that's why this is actually pathway of around 10 chemical reactions, and this pathway is also called as EMP pathway because it is discovered or it is first studied by these 3 scientists, Emden, Meyerhof and Parnas, right? So let's start studying this pathway, that is glycolysis, right? And in glycolysis, remember one thing, we have to understand what is occurring in each chemical reaction, what is the substrate, what are the products, what are the enzymes that are related with the particular chemical reactions, and which exactly the process is. See, if you want to remember the name, what you have to remember is whether the reaction is reversible reaction or irreversible reaction, and whether the chemical reaction, what kind of process is occurring over here, addition of phosphate or removal of phosphate or isomerization process, right? What kind of process is occurring over here? Understood? If you know the substrate product, you can understand what exactly process have occurred to convert substrate into product, right? Whether it is isomerization process or it is phosphorylation or dephosphorylation, right? So you can understand by seeing, by observing the substrate and product, right? And if you know the process, if you know name of substrate and product, it would be easier to remember the name of enzymes also, right? Because we know that name of enzyme is depending on process and substrate, and sometimes if it is reversible reaction, even if in some irreversible reaction, name is also depending on the product, right? So what I want to say is, name of enzyme is depending upon the process, substrate and sometimes product, right? So we need to understand, if we have learned substrate and product, we would be able to write what is the process, which kind of chemical reaction have occurred and which enzyme is involved in here. Understood? So let's start the pathway glycolysis. Most conservative process, most common process in all living organisms having cells, even those which are not having cells, virus, because viral cells are also doing respiration. When they have infected a host cell, that host cell is also doing respiration, and this viral DNA is taking advantage, or reproduction of virus is taking advantage of this respiration, because it needs energy to produce DNA molecule, RNA molecule, and which needs energy, and this energy is provided because of respiration. So every living organisms get energy, obviously except the chemosynthetic organisms. I think chemosynthetic organisms are also doing the same. So on every kind of living organism is doing this process. This is the most conservative process that is occurring in living organisms. Conservative means it is prevailing from long back, and still it is there in all the living organisms without any change, right? So this is the most conservative process that is occurring in all the living organisms. So let's start with the glucose, because we know that glycolysis is nothing but breaking down of glucose molecule 6 carbon containing compound into 3 carbon compound, that is pyruvic acid, right? So let's start with with glucose. So first substrate in glycolysis is glucose. Now this glucose will get converted into glucose 6 phosphate. Now this is phosphorylation process in which glucose get phosphorylated, right?
So phosphorylation process, what is the substrate here? Glucose. What is product here? Glucose 6-phosphate. So process that is occurring over here is actually phosphorylation. Right? So name of the enzyme which is used here is hexokinase. So hexokinase is a very important enzyme, right? As it is first enzyme in this process, so hexokinase becomes a critical enzyme without which glycolysis, on which glycolysis is highly influential. Understood? I mean, if concentration of hexokinase decreases, then rate of glycolysis will decrease remarkably. And simultaneously with the increase of hexokinase enzyme, and if there is abundant amount of glucose molecule as well, then the rate of reaction or rate of glycolysis will be increased. Right? So first enzyme in all the pathway carries very high significance, right? So first enzyme that is being used here is hexokinase. Understood? Now where is this phosphate is coming from? This phosphate came from it have came from ATP molecule. It have came from ATP molecule. ATP molecule get converted into ADP molecule and inorganic phosphate. Understood about this? Now, this glucose 6-phosphate will get converted into fructose 6-phosphate, right? Glucose 6-phosphate get converted into fructose 6-phosphate, right? Now, what this conversion should be called? That question I'm asking to you, right now. You don't have to give answer in comment or any such thing, but you can answer to yourself right now. What is the process? If you are good in chemistry, you would be able to answer this question, because we know that glucose is nothing but aldohexose, right? And fructose is ketohexose. So this is the only difference between glucose and fructose. That glucose is having double bond oxygen in its first carbon, while fructose is having double bond oxygen in its second carbon. So there is just transferring of oxygen molecule from first carbon to the second carbon, right? Transferring of oxygen atom, not molecule, oxygen atom from first carbon to the second carbon. Remaining all the things are same, and obviously replacing hydrogen atom. Remaining everything is same, right? So there is transferring of a functional group in a molecule, एक ही molecule में कोई एक functional group का transfer होना is called isomerization process, because both of them are isomers of each other, as there is no addition or removal occur over here in this chemical reaction. Just transferring of one functional group from one carbon to the from the first carbon to the second carbon is nothing but isomerization process. ये दोनों एक दूसरे के isomers हैं, right? So this process is called isomerization. Understood? It is called isomerization. And तो ये इसमें अभी आप लोग guess कर सकते हैं कि what should be the name of enzyme, right? Let me tell you, name of enzyme is, अगर आपने glucose 6-phosphate isomerase बोला है तो भी I would say it is correct. Its name is phosphoglucoisomerase, right? Its name is phosphoglucoisomerase. Understood? And let me tell you, this reaction is reversible, right? Name of enzyme is phosphoglucoisomerase. I'm very sorry for this short space. I have to write in very condensed manner over here, so please forgive me for this.
So enzyme over here is phosphoglucoisomerase because process occurred here is isomerization to the substrate phosphoglucose, that is glucose 6-phosphate, right? Now this fructose 6-phosphate will get converted into fructose 1,6-bisphosphate. Fructose 1,6-bisphosphate. Understood? Now, what is this process is called? Again, phosphorylation process over here. So let me write the name of process, that is phosphorylation process. Right? So what is the name of enzyme over here? See, here phosphorylation is occurring to the fructose 6-phosphate, right? Name of enzyme should be, yes, you can guess to yourself. It is, you can see over here, you can see name over here, and you can make out what should be the name of it. Yes, it is phosphofructose kinase. Remember, this is one word and these are two words, right? So name of this enzyme is phosphofructose kinase. Phosphorylation process is occurring over here, so its name is phosphofructose kinase. Understood? And again, where this phosphate have came from? Same as this process, that is ATP got converted into ADP plus inorganic phosphate, and this phosphate have added to the fructose 6-phosphate, and thus it got converted into fructose 1,6-bisphosphate. Understood? So this is just half of the glycolysis process. Remember, this first reaction and this third reaction are irreversible reaction, while this one is reversible reaction, right? And this process? This first process is phosphorylation, second process is isomerization process, and third process is again phosphorylation process. So if you remember the name, you would be able to write where you would be able to decide where you have to write kinase and where you have to write isomerase. Then you have to select name of substrate. That means in first process substrate is glucose, so we have simply take hexo. Right, we have simply take hexo for substrate and it is called hexokinase. Then second one is phosphoglucoisomerase, and third one is phosphofructokinase. Understood? So that's how there is formation of fructose 1,6-bisphosphate. For one glucose molecule to get converted into fructose 1,6-bisphosphate, 2 ATP molecule have been used. Understood? 2 ATP molecule used हो चुके हैं अभी तक. Understood? चलो फिर इसके बाद क्या होगा? तो let me write here fructose 1,6-bisphosphate. Then let's see what is occurring over here. Now here the thing is going to occur is very different, right? From in whole glycolysis process. अगर आपने कहीं पर pathway देखा होगा ना, तो ये step में आपने कुछ अलग ही देखा होगा, right? What is that thing? That thing is formation of two molecules from just a single molecule. Now still here all the chemical intermediates, glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,6-bisphosphate, all of them are 6 carbon containing compound. How many carbon are there? Till here 6 carbon containing compound. But now, from now onward, each and every molecule will be containing 3 carbon atoms, right? Now from onwards, every molecule that we'll see over here is containing, they are containing 3 carbon atoms in each of them, right? So let's write about them. So here 2 molecules will form, dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate, right? Now dihydroxyacetone and glyceraldehyde are nothing but triose sugar, right? They are monosaccharide triose sugar. Here again the difference between these 2 molecules is the only that this is aldehyde triose, this is aldo triose, and this is keto triose, right? Here in first carbon double bond O is there, and in here second carbon is having double bond O. So these two compound have the same difference as it is there between glucose 6-phosphate and fructose 6-phosphate, right? Having phosphate at the same carbon, but double bond O, double bond oxygen
is carrying different, is there with the different carbon atoms, right? Here second, that one is first because that is aldotriose and this is ketotriose, right? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, आपने DHA सुना होगा कहीं पर, DHA है ना, एंशोरपीडिया की एड में आता है ना, एक ऐसा सर्कल ऐसे डाल ऐसे डिब्बे में जाता हुआ दिखाते हैं, उसमें लिखा होता है DHA, और बॉर्नविटा की एड में पहले बहुत पहले ऐसा दिखाता है DHA दिमाग के विकास के लिए अच्छा है ना. So that is dihydroxyacetone, understood? And if it is having phosphate group attached to it, it is called dihydroxyacetone phosphate. And similarly, there is one more molecule, its isomer, which is called glyceraldehyde 3-phosphate. Now, अभी और एक चीज यहाँ पर क्या होता है? These two molecules are also interconvertible, right? Interconvertible because यहां पर भी एक एंजाइम होता है, तो दोनों प्रोसेस में एंजाइम होता है, राइट? यहां पर कौन सा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहां पर कौन सा प्रोसेस है, तो यहां पर कौन सा एंजाइम है, तो that enzyme is called aldolase. Here the enzyme that has been used is called aldolase. Understood? Here enzyme is aldolase. और यहां पर जो एंजाइम है वो एंजाइम को मैं बोलूंगा, बिकॉज द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन. सो नेम ऑफ एंजाइम इज वेरी सिंपल, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज. Understood? And yes, one more thing, glyceraldehyde 3-phosphate is a single word. Understood? I don't have space there, so I have just written simply like that, but it is a single word, right? So you have to write it in one line. Glyceraldehyde 3-phosphate, right? These two molecules are interconvertible, and this process again is called isomerization process. If you have observed it clearly, आप लोग अच्छे से देख पाओगे कि यहाँ पर और कुछ, यहाँ पर देखो तीन टाइप के प्रोसेस हो रहे हैं ना, एक फॉस्फोरिलेशन है, डिफॉस्फोरिलेशन है और आइसोमराइजेशन है ना, और एक नया आया अभी यहाँ पर एल्डोलेस. अंडरस्टूड? सो दीज आर द बेसिक केमिकल रिएक्शन व्हिच इज अकरिंग इन ओवर हियर. अंडरस्टूड? मूविंग टू द नेक्स्ट इज, चलो यहाँ पर क्या होता है, एक चीज यहाँ पर और एक चीज ध्यान देने वाली है, that is dihydroxyacetone phosphate is not used further. Instead of dihydroxyacetone phosphate, glyceraldehyde 3-phosphate will be used in further process, right? तो क्या होगा कि glyceraldehyde 3-phosphate का concentration कम होता जाएगा, right? And concentration of this will get increase. I mean वो ये वैसा का वैसे रहेगा, लेकिन इसका concentration decrease होते जाएगा because this is getting used up. Understood? तो क्या होगा, आप लोग को मालूम है rate of reaction is depending on concentration of substrate and concentration of product. Now these two are interconvertible between each other, right? तो ये इसका conversion जो इसमें होता है वो कम हो जाएगा because concentration of this molecule is lesser. But this side conversion, that is conversion of dihydroxyacetone phosphate to glyceraldehyde 3-phosphate will be increased. Understood? Because concentration of substrate has increased while concentration of product is decreased, right? लेकिन इसका reverse process का rate of reaction बहुत कम हो जाएगा, significantly decrease हो जाएगा because concentration of that particular chemical got decreased because it is used up in other chemical, in other conversion also, chemical conversion also. Understood? यहाँ पर और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, I have forgot to tell you that this two molecule also can get converted into fructose 1,6-bisphosphate, right? It can also, these two molecules can again join with each other and form fructose 1,6-bisphosphate. Understood? So this is a reversible reaction, plus this isomerization reaction is also occurring over here, and that particular molecule will have one more fate, that is it can get converted into, this molecule can get phosphorylate, again it will get phosphorylate, right? It can have tendency to, it can get phosphorylate by particular enzyme. And what is that particular enzyme? Here I would write that here the process which is occurring over here is phosphorylation process. तो यहाँ पर फिर से एक बार phosphorylation process होता है, और ये phosphorylation process से बनता क्या है, that is 1,3-bisphosphoglycerate. Understood? What is forming here?
1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अभी देखो यहाँ पर कोई बुक में ऐसा लिखा होगा बिस फॉस्फोग्लिसरेट की जगह पर यहाँ पर ऐसा भी लिखा होगा बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट इज ऑल्सो राइट, राइट। हम लोग यहाँ पर ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड दोनों ही लिख सकते हैं। दैट इज बिकॉज जब भी हम लोग फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को पानी में डालते हैं तो दिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड गेट कन्वर्टेड टू, आई मीन 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड गेट कन्वर्टेड टू बिस फॉस्फोग्लिसरेट। और सेल के अंदर सब कुछ पानी के अंदर ही होता है, आई मीन इन साइटोप्लाज्म glycolysis process occurring in cytoplasm, and cytoplasm water as media is there in which all this chemical reaction is occurring. So instead of 1,3 bis phosphoglyceric acid, I would write here 1,3 bis phosphoglycerate, right? This would be the most appropriate or more appropriate than glyceric acid. Understood? Now here the reaction which is occurring over here is, I would not call this reaction as just phosphorylation process. This process is also dehydrogenation, right? This process is also called dehydrogenation. So यहाँ पर phosphorylation तो हो ही रहा है लेकिन dehydrogenation भी हो रहा है, right? क्योंकि यहाँ पर ATP यूज नहीं हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पर phosphorylation नहीं लिखूंगा. I would write here dehydrogenation process. So this process is dehydrogenation. And the enzyme which will be used here is, guess what is it? Guess करने में भाई किसी को आपको बताना नहीं है, आपको कोई पैसे नहीं लगते हैं, राइट? तो आप गेस कर सकते हो. एंड गेस करने में फायदा ये है कि इफ यू वुड रॉन्ग, अगर आप रॉन्ग होगे तो आप और अच्छे से याद रखोगे, रख पाओगे, isn't it? Because you have correct yourself. ठीक है, अगर आपने रॉन्ग गेस किया है तो आप अपने आप को करेक्ट करोगे, हाँ अच्छा चलो ये मेरे से मिस्टेक हो गया, तो यू वुड बी लर्न इट मोर इजीली, राइट? राइट है तो भूलने के चांस है, लेकिन रॉन्ग है और आपने करेक्ट किया अपने आप को तो भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, राइट? ओके चलो, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate dehydrogenase, very long name, isn't it? Understood? Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, because the process occurred over here is dehydrogenation, removal of hydrogen, or I can say reduction. Reduction का तो मुझे पता नहीं, लेकिन removal of hydrogen आप लोग बोल सकते हो, ठीक है? अब ये यहाँ पर जो removal of hydrogen हुआ है वो कहाँ यूज होता है? तो that get used up in, अब यहाँ पर मुझे नया चौक लेना पड़ेगा. Let me take, okay. तो ये जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ वो कहां पर यूज? NAD plus will get converted into NADH plus H plus. Understood? So this hydrogen will be used over here, and this NADH plus H plus, ये molecule को underestimate मत करना. This molecule is much more important than ATP molecules. Understood? ये ATP से भी ज्यादा important है, because this will provide more energy than one ATP molecule. One molecule of NADH and H plus will provide more energy than that ATP molecule, right? So we should not underestimate that. Okay, and two molecules of phosphate, inorganic phosphate, will be used over here. Inorganic phosphate simply means PO4 minus 3. Understood? So PI stands for inorganic phosphate, right? Because for this phosphate I came from inorganic source, that's why we are writing here phosphate. Understood? So inorganic phosphate will be added over here, and number of molecule will be twice. Number of molecules. Number of this molecule is twice पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से दो मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि दोनों ही ये डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट and glyceraldehyde 3-phosphate, both of this molecule get used up in making this molecule. Understood? Glyceraldehyde 3-phosphate तो आपको मालूम ही है, और डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट देर सवेर तो glyceraldehyde 3-phosphate में कन्वर्ट होने ही वाला है, और फिर उसमें से वापस ये बनने ही वाला है. Understood? So per glucose molecule there will be formation of 2,1,3 bis-phosphoglycerate molecule. Understood? I mean it will form. They are formed. Understood? Okay, चलो नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं. फिर
यहां पर क्या बनेगा, यहां पर जो बनेगा दैट इज अच्छा, और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहां पर और एक मैं चीज आपको बताना भूल गया, दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन। Understood? This is also reversible reaction. Understood this? और यहां पर देखो प्रोसेस क्या हो रहा है, यहां पर प्रोसेस ये हो रहा है, चलो ये भी दो मॉलिक्यूल ही बनेंगे। अब यहां पर क्या प्रोसेस हो रहा है, तो हियर द प्रोसेस इज अकरिंग इज डीफॉस्फोरेशन, यहां पर डीफॉस्फोरेशन हो रहा है, इजंट इट? तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर, और ये फॉस्फेट जो यहां से निकल गया उससे क्या होगा, देखो दो मॉलिक्यूल है इसके, दोनों में से एक एक फॉस्फेट निकल गया, तो टोटल दो फॉस्फेट निकल गए, है ना? तो बनेगा क्या, अच्छा ओके, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, ADP plus will get converted into ATP, and how many? Two molecules of ADP get converted into two molecules of inorganic, two molecules of ATP. Understood? तो देखो यहां पर ATP फॉर्म हो गया। अब एक चीज यहां पर देखो, कितने ATP यूज हो चुके थे, दो ATP, यहां तक पहुंचने में दो ATP ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, isn't? और यहां पर दो ATP बन गए, मतलब ATP का हिसाब किताब यहां पर कंप्लीट हो गया भाई, है ना? जितने दो ATP यूज हो गए थे, दो ATP वापस बन गए। अब बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ग्लाइकोलाइसिस से, अब तुमको जहां आगे जो करना है करो, मेरे दो ATP तो वापस मिल गए ना मुझे, isn't it? तो यहां पर वापस दो ATP बन गए हैं। सो ओवरऑल टिल हियर नो ATP इज कंज्यूम्ड और फॉर्म हियर। नेट नो ATP molecule has consumed or formed over here. Understood? But yes, अगर ग्रॉस देखेंगे तो two ATP molecules has been consumed and two ATP molecules is formed over here. Understood? अब ये प्रोसेस को मैं बोलूंगा डीफॉस्फोरेशन प्रोसेस। तो ये मॉलिक्यूल का नाम भी क्या होगा आप देख लेना अभी। चलो, डीफॉस्फोरेशन प्रोसेस, फोराइलेशन, and name of the enzyme that is used over here is phosphoglycerate kinase. Phosphoglycerate kinase. Name of the enzyme that is used over here is phosphoglycerate kinase. देखो यहां पर name of enzyme is taken from the product, not from the substrate. Understood? Because this is reversible reaction also. This reaction is reversible reaction. And देखो phosphoglycerate का phosphorylation होकर 1,3 bisphosphoglycerate भी बन सकता है, right? That's why name of the enzyme which is used over here in this reversible reaction is phosphoglycerate kinase. Understood? This is the enzyme which is carrying out both of the reaction, that is conversion of 1,3 bisphosphoglycerate from 3-phosphoglycerate into 3-phosphoglycerate and reverse of this 3-phosphoglycerate into 1,3 bisphosphoglycerate molecule. Understood? Okay. Now what is occurring over here? Now what I will do here, space is very less, so I will move to there. Understood? Okay. तो मैं ऐसा करता हूं अभी, चलो यहां से मैं नीचे लिख देता हूं। ओके, two phosphoglycerate. What is forming over here is 2-phosphoglycerate. Understood?
एंड इन दिस केमिकल रिएक्शन इफ यू सी दिस हियर, यहां पर वापस फॉस्फेट का ट्रांसफर हुआ है, राइट? अभी तक ट्रांसफर हो रहा था डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, अब लेकिन यहां पर ट्रांसफर, ये एक और आइसोमरेशन प्रोसेस फिर से आ गया जिसमें ट्रांसफर हुआ है फॉस्फेट मॉलिक्यूल का from third carbon to the second carbon, right? So this process will be called again isomerization process. Isomerization, है ना? And name of this, यहां पर थोड़ा सा नेम अलग है, तो यहां पर नेम आप अच्छे से ध्यान रखना कि what is the name exactly over here. Name of this enzyme which is used in this reaction is फॉस्फो। तो चलो ये एंजाइम अलग है, तो इसमें मैं एंजाइम का नाम यहां पर लिख देता हूं, ठीक है? एंड आई विल नीड मोर स्पेस टू राइट ओवर हियर, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दैट स्पेस। चलो, तो ये एंजाइम का नाम होगा फॉस्फो, आई मीन है फॉस्फो ग्लिसरो म्यूटेज। Word phosphoglyceromutase. Name of the enzyme is, understood? So this is what is occurring in this process. This enzyme is used and it is just isomerization of 2-phosphoglycerate into 3-phosphoglycerate into 2-phosphoglycerate. And how many molecules? Again, yes, 2 molecules. Understood? Now again, what is occurring over here? From this molecule there will be formation of Now what is occurring over here? From this molecule there will be formation of phosphoenol pyruvate. Again, how many molecules? 2 molecules, right? 2 molecules of phosphoenol pyruvate. Understood? तो यहां पर भी फिर से क्या हो रहा है? यहां पर तो कुछ अलग ही रिएक्शन हो रहा है, right? That's why name of this, I mean, यहां पर जो एंजाइम यूज होगा, द एंजाइम विच विल बी यूज्ड ओवर हियर इज इनोलेज। अंडरस्टूड? The name of the enzyme which is used over here is enolase. Understood? So using this enzyme, तो आपको 2 ऐसे नाम एंजाइम के नाम हैं छोटे छोटे जो आपको ऐसे याद रखना है विदाउट प्रोसेस, दैट इज इनोलेज एंड आइडोलेज। बाकी सब में देखो आप लोग प्रोसेस से ही एंजाइम का नाम है, और एक यहाँ पर थोड़ा सा अलग नेम है, ठीक है? बाकी आप अगर पूरा प्रोसेस में देखो तो सेम नेम इज यूज्ड, राइट? आई मीन नेम ऑफ एंजाइम इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रोसेस इज अकरिंग ओवर हियर, इजंट इट? अंडरस्टूड? तो यहाँ पर भी वाटर का रिमूवल या एडिशन होता है। राइट नाउ आई हैव नॉट रिमेंबर्ड दैट, लेकिन यहाँ पर वाटर का एडिशन और रिमूवल होता है। And last one is conversion of phosphoenol pyruvate into pyruvic acid. So let's see what is occurring over here. I think here removal of water is occurring. I'm not sure about it. Let's see what is the last occurring over here. And now this reaction is again irreversible reaction, right? This reaction, the reaction that I'm going to write over here is again irreversible reaction. That is conversion of phosphoenol pyruvate into pyruvate, right? Now if you have observed it carefully, you would see here that there is removal of phosphate group. There is removal of phosphate group. Understood? So this phosphate group, if it is removed, and again from each molecule of phosphoenol pyruvate, 1 phosphate group have removed. So there are 2 phosphoenol pyruvate which have lost their phosphate group. So here there will be formation of 2 ATP from 2 ADP. So there is formation of ATP molecule from 2 ATP molecule from 2 ADP molecule, that is from 2 adenosine diphosphate there is formation of 2 adenosine triphosphate. So in total there is formation of 2 ATP molecule, and so gross production of ATP molecule is 4 molecules and gross use of ATP molecule is just 2, right? तो 2 molecule consume हुए हैं और 4 molecule बने, तो there will be net production of ATP is 2 ATP molecule per glucose molecule in a glycolysis process. तो अगर सिर्फ glycolysis process होता है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 ATP बनते हैं, and never underestimate NADH molecule as well.
NADH मॉलिक्यूल, एक एक्चुअली NADH मॉलिक्यूल भी दो बनते हैं, राइट? देयर विल बी टू फॉर्मेशन ऑफ टू NADH मॉलिक्यूल्स इन ईच फॉर ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल, yes. Understood? Because ये देखो ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से तो ये बनने वाला है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, राइट? लेकिन ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा और उसमें से भी ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनेंगे, ठीक है? तो ये दोनों मॉलिक्यूल डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनने ही वाले हैं, राइट? सो देयर विल बी टू कन्वर्जन्स which will lead to formation of two molecules of NADH plus H, 2H plus, right? तो ये भी यहां पर भी 2H plus है. Understood? So this is how the whole process is occurring. Yes, one more thing is remaining, which is the last process and what enzyme is used in last process, right? And that is, देखो यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, dephosphorylation हो रहा है ना? Here there is again dephosphorylation process as it had occurred over here. Dephosphorylation process, and the enzyme that is used over here is, देखो यहाँ पर नाम है ना, फिर से प्रोडक्ट से लिया गया है. So what is the name of this enzyme is pyruvate kinase. तो एक तो dephosphorylation process तो हुआ ही है, right? This process called dephosphorylation, whereas ADP got phosphorylate and pyruvate kinase is the enzyme which is used over here, and at last there is formation of two molecules of pyruvate, that is pyruvic acid. तो यहाँ पर glycolysis got completed. Understood? देखो फिर से एक बार मैं आपको सब कुछ रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है? देखो अगर यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से ध्यान दिया है इन ऑल द प्रोसेस तो आपको अच्छे से याद होगा, राइट? बिकॉज दिस इज समथिंग विच यू हैव टू लर्न थॉरोली. और ग्लाइकोलाइसिस आपको अगर ये पाथवे पूरा आता है, इफ यू कैन राइट दिस होल बाय योर ओन, देन यू कैन राइट इट्स थ्योरी वेरी इजीली, राइट? तो आपको मैं एक चीज और भी यहाँ पर बता दूं कि देखो दिस आर बायोकेमिकल पाथवे. Glycolysis is also called a biochemical pathway, so you cannot learn it by just reading it. ठीक है, इसको लर्न करना है ना तो उसका एक ही रास्ता है as per I know. तो in my opinion it is to write it again and again. तो एक बार आप ये पूरा समझ लो, बाद में आप एक बार देख के लिखो, एक दो बार देख के लिखो, and then try to write without saying it anywhere, right? देखो फिर कितने मिस्टेक्स होते हैं. Try to make no mistakes in all this pathway, क्योंकि जब आपको कोई चीज ऐसी होती है जो आपको पूरा अच्छे से आ सकता है, तो why to make mistake in that, isn't it? So try to make zero mistakes in this kind of pathways. Understood? और आप अच्छे से लर्न करो. और अगर आपको सिर्फ बोर्ड का एग्जाम देना है तो you don't have to remember name of process and name of enzymes. What you need to learn is name of substrate products, that is intermediate chemical. Final product is pyruvate, that you already know. Initial substrate is glucose, that you are already knowing it. तो फिर chemical intermediates आपको बीच वाले याद रखने हैं, and where NADH plus 2H plus is forming and where ATP are forming, where ATP got used up. तो ये आपको लर्न करना है. Understood? In short, अगर आपको नीट का एग्जाम नहीं देना है तो you don't have to bother about name of process and name of enzymes. So let's start glycolysis once again. So first we will go to those process which is occurring in initial stage of glycolysis. The first substrate is glucose. Glucose का phosphorylation होता है, yes, wherein ATP molecule got used up, and enzyme here that is being utilized for this chemical reaction is hexokinase. Due to which formation of glucose 6-phosphate is occurring. फिर glucose 6-phosphate का isomerization process होगा, जिसमें enzyme कौन सा यूज होगा, phosphoglucose isomerase, और फिर उससे बनेगा हमारा fructose 6-phosphate. Understood? Now first chemical reaction was irreversible reaction, but second chemical reaction is reversible. Okay, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए आप लोग एक ही चीज याद रखो, फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट केमिकल रिएक्शन इन ग्लाइकोलिसिस इज इरिवर्सिबल, रिमेनिंग एवरी केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल. ठीक है, तो ये आप ऐसे याद रखोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, फिर फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट का फॉस्फोरिलेशन होता है, जहां पर फिर से एटीपी यूज होगा. तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में एटीपी यूज होता है.
अंडरस्टूड। उसके बाद इसके बाद कभी भी अभी एटीपी यूज नहीं होगा, अंडरस्टूड। यहां तक एटीपी यूज होता है, कंज्यूम होता है, इसके बाद अब कुछ होगा एटीपी के साथ तो सिर्फ वो एटीपी बनेगा, राइट, दैट विल बी फॉर्मेशन। तो यहां पर लास्ट टाइम ये एटीपी कंज्यूम हो चुका जिसमें फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस हुआ है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का बाय द एंजाइम कॉल्ड फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज, and there will be formation of fructose 1,6 bis phosphate, understood. After this process, what is occurring over here, this molecule get break up into two molecules. This is up to here, up to fructose 1,6 bis phosphate, 6 carbon atoms are there in a molecule, but now there will be only 3 carbon atoms in a molecule, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बाय द एंजाइम कॉल्ड एल्डोलेज, अंडरस्टूड। और ये दोनों मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे में कन्वर्ट होते जाते हैं बिकॉज अगेन दीज आर लाइक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, एक एल्डोज, एक में एल्डिहाइड होता है, एक एल्डिहाइड होता है, एक कीटोन होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, दिस इज कीटोन एंड दिस इज एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड O का पोजीशन में सिर्फ डिफरेंस है। तो दैट इज, तो ये इंटर कन्वर्जन को हम लोग बोलेंगे आइसोमराइजेशन प्रोसेस व्हिच विल बी कैरिड आउट बाय एंजाइम ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम, अंडरस्टूड। नाउ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वापस कन्वर्ट होकर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट भी बन सकते हैं। दैट मींस दिस केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन एज यू ऑलरेडी नो, राइट। नाउ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहां पर उसका और एक प्रोसेस हो सकता है, दैट इज अगेन देखो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तीन रिवर्सिबल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि इट गेट कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। यहां पर एक चीज देखो आपने, मैंने जितना भी येलो कलर से लिखा है दैट इज नेम ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स दैट आर गोइंग टू बी पार्टिसिपेट और दे आर और प्रोडक्ट्स, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ सब्सट्रेट प्रोडक्ट्स के नाम मैंने येलो कलर चॉक से लिखा है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर क्या बनेगा 1,3 bis phosphoglycerate, there will be formation of 2 molecules of 1,3 bis phosphoglycerate molecules। क्यों? एक तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनेगा, दूसरा मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से बनेगा, राइट, वाया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अंडरस्टूड। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है बिकॉज दिस इज डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस, so name of enzyme that is used over here is glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase, जहां पर 2 NAD plus molecule get convert into 2 NADH plus 2 H plus molecule. Why? Because 2 molecules of 1,3 boy phosphoglycerate molecule is forming, right? This molecules are forming, I mean 2 molecules are forming over here, right? That's why 2 NAD plus get converted into 2 NADH plus 2 H plus, understood, and 2 inorganic phosphate molecule will be used up. That's why this glycerate molecule is phosphate twice, right? It is phosphorylated twice. One phosphate group is at first carbon and another is at third carbon, understood? Okay. Now अब क्या होगा, यहाँ पर डीफॉस्फोरेशन प्रोसेस होगा जहां पर ये फॉस्फेट पहला कार्बन में है वो निकलेगा, राइट। नाउ देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स, now as there are 2 molecules, so there will be removal of 2 inorganic phosphate which will be added up to the adenosine diphosphate, not diphosphate, diphosphate, and so there will be formation of 2 molecules of adenosine triphosphate। तो यहाँ पर 2 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे बिकॉज यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में से एक फॉस्फेट निकल रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल में से 2 फॉस्फेट, टोटल 2 फॉस्फेट निकल रहे हैं, तो टोटल 2 ATP बनेंगे फ्रॉम 2 ADP। So the name of process is dephosphorylation, and enzyme which will be used over here is phosphoglycerate kinase, phosphoglycerate kinase। After this what is occurring, तो अब यहाँ पर क्या बन गया, 3 phosphoglycerate molecule बन गया, right, which is having only 1 phosphate group at third carbon atom। तो यहाँ पर फिर से आइसोमराइजेशन प्रोसेस होगा, isolation process होगा, and the name of enzyme is phosphoglyceromutase, name of the enzyme is phosphoglyceromutase, because of which there will be formation of 2 phosphoglycerate। मतलब यहाँ पर सिर्फ phosphate group का movement हुआ है from first carbon, it has changed from first carbon to the second carbon, right। तो third carbon से वो second carbon पे आ गया है, understood ना, ये साइड अकॉर्ड।
After that, what is occurring over here is this 2-phosphoglycerate get converted into 2-phosphoenol pyruvate, right, by the enzyme called enolase. तो enolase enzyme यहाँ पर यूज होता है, and this phosphoenol pyruvate get used up in dephosphorylation process. यहाँ पर dephosphorylation process होता है, हर एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से 1 फॉस्फेट रिमूव होता है. तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है, तो देयर विल बी रिमूवल ऑफ 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल इन टोटल, 1 फ्रॉम ईच फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, राइट, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स इन टोटल, अंडरस्टूड, by using the enzyme called pyruvate kinase. यहाँ पर एंजाइम कौन सा है? Pyruvate kinase. And the final product that is forming over here is pyruvate or pyruvic acid. Understood? Whatever you say, both of them are correct. Understood? Now, तो ये पूरे प्रोसेस को फिर से मैं एक बार समराइज कर देता हूं. तो कुछ चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट थिंग इज, तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर यहाँ पर ध्यान दोगे अच्छे से, तो आपको पता चलेगा देयर विल बी कंजम्पशन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल. देयर इज कंजम्पशन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स. एंड इफ यू लुक एट ओवर हियर, तो यहाँ पर 2 ATP बन रहे हैं और यहाँ पर भी 2 ATP बन रहे हैं. तो टोटल 4 ATP बन रहे हैं और यहाँ पर 2 ATP यूज्ड अप हो रहे हैं, isn't it? तो 4 minus 2, यहाँ पर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट. तो यही हो रहा है यहाँ पर 4 ATP molecules minus 2 ATP molecules, 4 ATP molecules forming over here, 2 ATP molecules consumed over here. So 4 minus 2 becomes 2 ATP molecules. So net formation of ATP molecules is 2 ATP molecules. Very easy to understand. And never underestimate NADH. So there is also formation of NADH plus 2H molecules. I mean plus 2H ions. Understood? तो 2 NADH molecules plus 2H plus ions बन रहे हैं. This is very important. ये पूरा not just NADH plus, लेकिन NADH plus H plus. So whole this thing is very important. तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर 2 ATP नेट बन रहे हैं और 2 NADH plus 2H plus भी बन रहे हैं. अंडरस्टूड? और एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर till here, whole this process till here, all the chemical intermediates and substrate, the main substrate is of 6 carbon atom, है ना. हर एक मॉलिक्यूल, यहाँ तक हर एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन एटम वाला है. After this, after fructose 1,6-bisphosphate, all the chemical intermediates that we have studied here is of 3 carbon atom. Till pyruvate. Understood? Pyruvate तक सब 3 कार्बन एटम्स के होते हैं. ओके, फिर इसके बाद क्या है, और एक चीज ध्यान देने वाली चीज क्या है कि यहाँ पर देखो टोटल कुछ फ्यू टाइप ऑफ प्रोसेस ही होते हैं. भले ये केमिकल पाथवे इज वेरी लॉन्ग, बट यहाँ पर फ्यू टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर करिंग. दैट इज, वन इज फॉस्फोरिलेशन, डीफॉस्फोरिलेशन. एक है फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन. देखो यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन हो रहा है और ये यहाँ तक फॉस्फोरिलेशन हुआ है और ये 2 प्रोसेस में डीफॉस्फोरिलेशन हो रहा है. और एक चीज क्या है, आइसोमराइजेशन भी हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर आइसोमराइजेशन बहुत बार हुआ है. एक बार यहाँ पर आइसोमराइजेशन हुआ है, फिर 1 over here and 1 more टाइम ओवर हियर आइसोमराइजेशन प्रोसेस हुआ है. तो ये 3 टाइप के प्रोसेस है ना, बार बार हो रहा है. ठीक है, और एक चीज क्या है कि यहाँ पर एक जगह पर एल्डोलेस एंजाइम इज यूज्ड, ये, और यहाँ पर एनोलेस एंजाइम इज यूज्ड. तो यहाँ पर कुछ अलग प्रोसेस हुआ है. तो ये चीज आप ऐसे अगर याद रखोगे, इट विल बी इजियर फॉर यू टू लर्न दिस. अंडरस्टूड? तो आज के लिए बस इतना ही. दिस इज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, most conservative process that is occurring over all of the living organisms, right, containing cells, having cytoplasm, hence this